All right, assalamu alaikum everyone. I hope you guys are all doing well. So I'm starting this O-level math past paper session today as well, inshallah. And I'm starting with this paper, May, June 2022. This week, we will try to cover 4 papers, May, June ke paper 1, 2, and 2, and October, November 2022 ke paper 1, 2, and 2. Okay? That's what I plan to do this week. Before I start, just to let you know, I have already solved a number of paper 2s from recent years. Last 5 years के बहुत सारे paper 2s आपको मिल जाएंगे solved already on the channel. If you look at the description below, I've posted the link to that playlist, solved yearly past papers, and in the description below. You can find all of those solved papers there. And also, if you look at the description, I've posted a number of other videos, links in the description as well, which are the relatively bigger topics that you have in O-levels. I've covered them in a few videos along with their past papers. You should find that content helpful as well. All right, now I primarily teach A-levels at this point. So if you find this content useful, it would be very helpful if you share it with others as well, who might be able to benefit from this, so that I have the motivation to continue doing this. Okay. All right. So let's begin with this. Paper 1, 2, May, June 2022. Let's start with this one. Okay, so it says in the first question, work out 2/3 plus 1/6. ये आपने evaluate करना है. Remember, paper 1 के अंदर calculator नहीं allowed होता, so you can't use your calculator. Okay, so how do you do this? We have to make the denominator the same and for both fractions. इसका LCM ले लें, क्या हो जाएगा? First fraction को we can write as 4/6, and we have 1/6 here, and that gives us 5/6. The result turns out to be 5/6. Okay, and you have 0.4 into 0.2. How do you multiply these two? You just multiply 4 and 2. What does that give you? That gives you 8. And then you think about how many numbers do we have after decimals. In both of them, you have two numbers. So after the decimal here, you need to have 2 numbers. So one is 8, the other one is going to be 0 here. So the result is going to turn out to be 0.08. Okay. So this turns out to be 0.08. All right, now you might have done it another way. That's okay. There are many different ways of doing this. As long as you're getting the same answer at the end, that's all that matters. Okay, so कोई working आपको नहीं show करनी होती, आपको सिर्फ ये करना होता. Okay. All right, walaikum assalam, Yashveen. Let's look at the second question. Okay, so Asha asks a group of students about their favorite food. The table and pictogram show some of the results that she has. Okay, अब यहाँ पे देखें आपके पास fruit names रखे हुए, and then you have their frequency. So she's asking different people. The number of people who tell her that their favorite fruit is apple is 8. So 8 students tell her कि उनका favorite fruit apple है, right? 5 of them tell her कि उनका favorite fruit orange है, and so on. Okay, ये चीज यहाँ पे इस तरह से pictogram में भी उसने represent की हुई है नीचे. Now in the first part it says complete the table and the pictogram. Okay, अब यहाँ पे देखिए उसने pictogram की key दी हुई है. उसने कहा this one full circle represents 4 people. One full circle represents 4 people. अब देखें, first of all we have 8 here for apple. तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा? You're going to have 2 circles here because one circle represents 4 people. So you have one circle for 4 people and then another circle for another 4 people. And that gives you 8 people here. Okay. Achha. For banana, you have the number missing in the table. आपके पास 3 circles आ रहे हैं. एक circle 4 represent करता है. So it's 4 plus 4 plus 4. That is going to give you 12. Banana की जगह पे आप 12 लिख देंगे. ठीक है. अच्छा, orange का number आपको पता है 5 है. So you have one full circle because that represents 4. But then you have 1 left. 1 कैसे represent करें? यहाँ पे देखिए उसने for example इस तरह से एक represent किया हुआ है. 3/4 show किया हुआ है. इसका मतलब है 3.
1 का मतलब आपको 1 क्वार्टर शो करना है. Okay, now you can draw something like this. 1 quarter like this. Okay, आप कोई भी क्वार्टर बना दे, किसी भी कोई भी एक कॉर्नर बना दे चारों में से. So let's say you draw it like this. This is what you have for orange. Okay, अब melon count कर लें कितने. This is 4 and then this is 3 quarters. So out of 4 you have 3 here. So the number of people, the number of students who tell her that their favorite fruit is melon, that is going to be 7. Okay, so आपने table और pictogram complete कर दिया. In part B, it says write down the mod. Mod क्या होता है? The number, the whatever the variable is that's repeated the most. यहाँ पे सबसे ज़्यादा frequency किसकी है? तो जिसकी भी सबसे ज़्यादा frequency है, that is going to be your mod. सबसे ज़्यादा frequency यहाँ पे हमारे पास banana की आ रही है. So the mod here is going to be banana. All right, so we write banana here, and that's our answer here. All right, let's move on. Question number 3. Okay, so we have this given that A and B are vertices of a quadrilateral. Quadrilateral क्या होता है? कोई four-sided figure. ठीक है? Line L is the line of symmetry of the quadrilateral. Okay, so basically ये जो line L आपके पास आ रही है, ये line of symmetry है. इसका मतलब है कि इसके लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होगा क्वाड्रिलेटरल का और राइट साइड वाला पार्ट होगा वो एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस होंगे, राइट. सो इफ यू हैव वन पॉइंट ए हियर एंड अनदर पॉइंट बी हियर, आपको बाकी दो वर्टिसेस फिगर आउट करने में क्या होंगे. तो अब देखें, एक पॉइंट अगर बी यहाँ पर है तो क्योंकि लाइन एल लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इस लाइन में जो रिफ्लेक्शन होगी इस पॉइंट बी की वो भी एक वर्टेक्स होएगा. तो आप देखें इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगी. बी से एक परपेंडिकुलर बनाएं. दिस इज हाफ अ बॉक्स डायगोनली, तो हाफ बॉक्स आप राइट और आगे चले जाएं, यू गेट अनदर पॉइंट हियर फॉर द क्वाड्रिलेटरल. ये आपका एक और वर्टेक्स आ गया क्वाड्रिलेटरल का. सिमिलरली ये पॉइंट ए है, ए की रिफ्लेक्शन भी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए. तो ए को आप देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन एल से कितना है. दिस इज 1 बॉक्स डायगोनली, तो 1 बॉक्स आपको और उस साइड पे जाना पड़ेगा. दिस इज अनदर पॉइंट दैट यू हैव. ये दो पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं जो क्वाड्रिलेटरल के बाकी दो वर्टिसेस होंगे. उसने क्या कहा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस. उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. एक के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ रहे हैं 4 2, right? So this one is 4 and 2 and the other one is 3 and 4. You just write them here in any order, it doesn't matter. So you have 4 and 2 and 3 and 4. These are the two vertices that you have here. Okay, let's move on. That was pretty straightforward. Question number 4. The temperature inside Luke's house is 18 degrees Celsius. The temperature outside his house is minus 3 degrees Celsius. Find the difference between these temperatures. Okay, 18 minus minus 3. You have to be careful with the signs here. 18 minus minus 3, right? So ये क्या हो जाएगा, 18 plus 3, and that gives you 21. So this is going to be 21 degrees Celsius. That's the difference between the temperatures. आप उल्टा भी कर सकते थे, आप minus 3 minus 18 भी कर सकते थे. That also gives you 21. So the difference at the end is 21. Right? For negative I, positive I, that doesn't matter. The actual magnitude of the difference is 21. So आपने यहाँ पे 21 लिख दिया. ठीक है. Let's look at part B now. It says Luke's thermometer measures the temperature correct to the nearest degree. At midnight, the thermometer measures the temperature outside as minus 6 degrees Celsius. Find the upper bound of the temperature outside at midnight. अब देखिए उसने क्या मेजर किया है, -6 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये थर्मोमीटर क्या करता है, इट मेजर्स करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री. ओके, नियरेस्ट डिग्री तक मेजर करता है. इसका मतलब क्या होगा, अगर -6 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है तो असल में जो टेम्परेचर होगा वो किसके दरम्यान में होगा, 6 दरम्यान में. इसके हम 0.5 लेफ्ट पे कर लें, दैट्स -6.5, और 0.5 राइट पे कर लें, -5.5. जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो इन दो वैल्यूज के दरम्यान में होगा, -6.5 और -5.5 के दरम्यान में. अब उसने क्या पूछा है, अपर बाउंड, राइट. मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है. रिमेंबर, नेगेटिव नंबर्स के अंदर जो छोटा मैग्नीट्यूड होता है, दैट्स एक्चुअली अ बिगर नंबर. सो -5.5 इज द लार्जर नंबर. दिस इज योर अपर बाउंड एंड दिस इज योर लोअर बाउंड. उसने अपर बाउंड पूछा हुआ है आपसे. अपर बाउंड में आप क्या लिखोगे,
It's -5.5 degrees Celsius. ठीक है? Let's move on. That was question number 4. Question number 5, it says the scale drawing shows the positions of 2 villages, A and B. The scale is 1 centimeter to 2 kilometers. 1 centimeter represent कर रहा है 2 kilometers को इस diagram के ऊपर. In the first part, it says find the actual distance between village A and village B. अच्छा, तो आपने क्या करना है, ए और बी के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना. अब ये आपके पास जो डायग्राम होगी पेपर के अंदर वो टू स्केल दी होगी, राइट? आपने क्या करना है, आपने अपने स्केल से ये डिस्टेंस मेजर कर लेना है. ठीक है? यू कैन सी व्हाटएवर दैट टर्न्स आउट टू बी. आपके पास कुछ ये आएगा सेंटीमीटर्स में. ठीक है? you'll get something in centimeters. Now whatever that value is, now I don't have a paper here, I can't really measure this. I don't have this printed. आपको जो printed होगा वो scale पे होएगा. आपने ये measure करना है. So इसके आप देखेंगे क्या value आती है. Let's say this is, I don't know, 10 centimeters. अगर आपके पास, let's suppose, just as an assumption, अगर आपके पास ये 10 centimeters आ जाता, उसने कहा था distance find करना है actual distance. 1 centimeter is representing 2 kilometers. तो 10 centimeters क्या represent करेगा? 20 kilometers. तो आपने जो आंसर लिखना होगा वो किलोमीटर्स में लिखना होगा. आप मेजर करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और वो आपका किलोमीटर में आ जाएगा. ठीक है? You can see what that, whatever that turns out to be. Let me actually just confirm this from the marking scheme and see what the actual number is going to be. Let me have a look at this. Yeah. So you would have the actual distance somewhere around 9.3 centimeters. Okay? तो आप क्या करोगे? 9.3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे and that's going to give you 18.6 kilometers, and that's what you're going to write here. ठीक है? अब इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर वो मार्जिन ऑफ एरर देता है कुछ, तो आपका थोड़ा बहुत आंसर ऑफ हो सकता है, and that's going to be acceptable. So for example, इसके अंदर उसने रेंज दी हुई है 9.1 से लेकर 9.5 तक. That's a lot. अगर आप थोड़ा बहुत ऑफ कर भी देते हो, it's going to be correct. अच्छा, the next part says measure the bearing of B from A. Okay, now understanding this terminology is really important. Bearing of B from A. From के बाद जो पॉइंट आ रहा है ना, इससे आपने bearing measure करनी है, इससे एंगल measure करना है. Okay, A is the point of reference. तो आपने A पे खड़े होना है. From A का मतलब you have to be at A. A पे खड़े होके आपने देखना है B की bearing क्या है. Bearing of B from A. तो A पे आप खड़े हो, इस पे नॉर्थ बना हुआ है, इससे bearing measure करनी है B की. Bearing कहाँ से measure करते हैं? नॉर्थ से measure करते हैं clockwise direction में, right? You would be measuring this angle. ये एंगल आप ऐसे मेजर कर रहे होगे अपने प्रोटेक्टर से. ठीक है? You can see what that turns out to be. You're going to put your protector like this. आपके पास जो D होगा वो आप सेंटर रखेंगे A के ऊपर and you'll put it like this. इस शेप के अंदर आपका D आ रहा होगा और आप ये इतना एंगल उससे मेजर कर लेंगे कि क्या आता है. ठीक है? And whatever that turns out to be, then let me just check what this should be. ये आपके पास आना चाहिए around 73 degrees. So let's say this is 73 degrees. अब आपने लिखनी है bearing. Bearing, remember, आप लिखते हो 3 आपके जो है वो numbers होते हैं, 3 digits में आप लिखते हो. Okay, so 73 degrees अगर आपके पास याद है तो आप bearing क्या लिखोगे? You'll say this is 073 degrees. That's the bearing that you have. Okay. All right, how does that make sense? Let's move on. Question number 6. It says Kabir invests 150 degrees. Sorry, what I'm saying? Kabir invests $250 in a savings account. The account pays simple interest at a rate of 1.5% per year. Calculate the total amount of interest he will receive at the end of 4 years. Okay, अब देखें, simple interest है, compound तो हो नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? 1 year का interest निकाल लो, वो कितना आता है? How do you do that? In fact, सबके निकाल लेते हैं इकट्ठा, हम formula use कर लेते हैं. Don't just not think about it too much. Let's just use the formula. I equals PRT over 100, right? Now, what's the principal? The principal amount is 250.
What's the rate? Rate is 1.5%. 1.5% का मतलब है 1.5 over 100. तो ये 100 जो नीचे आ रहा है उस वजह से आ रहा होता है, राइट? तो अगर आप 1.5 ऊपर लगते हो तो नीचे आप 100 से डिवाइड करो, that basically is 1.5%. Okay, and then what's the time? कितने years के लिए आप कर रहे हो? You're doing this for 4 years. Let's just evaluate this and see what that turns out to be. ये आपको remember calculator नहीं allowed, तो आपको खुद से करना पड़ेगा. How can you do that? You can first cancel this out. 100 and 4. What does that leave you with? You have 25 in the denominator. Okay, 100 और 4 cancel करके 25 आ गया denominator में. अब देखें 250 over 25. What should that be? That should be 10, right? So 10 into 1.5. What does that give you? 1.5 into 10. That is going to give you 15. So the answer turns out to be $15, and that's what you write there. Okay. That was question number 6. Let's move on. Question number 7. Now this is the area of the rectangle is 9 centimeters square. The area of the triangle, which triangle are we talking about? There's only one triangle, this triangle. This is 85 millimeters square. Now notice the difference in units. This is centimeter square, this is millimeter square. Calculate the shaded area, give your answer in centimeter square. Centimeter square में आपका final answer चाहिए. इसका मतलब ये है कि जो ये millimeter square वाला number है, इसको भी आपको centimeter square में convert करना पड़ेगा पहले. Now, what's the conversion? Remember, 1 centimeter is equivalent to 10 millimeters. Right? 1 centimeter के अंदर कितने millimeters होते हैं? 10 millimeters. 1 centimeter square के अंदर कितने millimeter square होंगे? आप उसको 10 को भी square कर दोगे, and that's going to give you 100 millimeter square. Okay, so 1 centimeter square corresponds to 100 millimeter square. तो अगर आपने millimeter square को centimeter square में convert करना हो, how would you do that? You'd say 1 millimeter square जो है वो कितना होएगा? 1 over 100 centimeter square. या फिर आप ratio method use कर ले, however you're more comfortable. इसको आप पहले convert करेंगे millimeter के अंदर. So let me actually do it using the ratio method. So you have 1 and 100 there. हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लेते हैं. This is centimeter square. And this is millimeter squared. Centimeter square में जो 1 unit होता है वो millimeter square में 100 होता है. तो millimeter में अगर आपके पास 85 है तो यहाँ पे centimeter square में कितना होना चाहिए? Let's figure that out first of all. Cross multiply कर लें, that gives you 85 equals 100 times x, and the value of x turns out to be 100 over 85. No, sorry, the other way around, 85 over 100. And what does that give us? That gives us 0.85. centimeter square. So जो area है triangle का, that is 0.85. Now what are we looking for? We're looking for the shaded area. Shaded area क्या होगा? Rectangle में से triangle minus कर दें, and let's see what that turns out to be. Shaded area is equal to 9 minus 0.85. You can subtract this. That's going to give you 8.15 centimeters square. All right. That's the shaded area that we were looking for in centimeter square. Okay, let's move on. Question number 8. The diagram shows a pentagon. Find the value of A. A is this angle here. Now, how do you find this value of A? You have to know what's the sum of angles in a pentagon. Remember, sum of angles का formula आपके पास क्या होता है? Sum of angles in any polygon, that is n minus 2 into 180 degrees. Right? This is a pentagon. Pentagon में n की value क्या होगी? N is going to be 5, right? So that's 5 minus 2 into 180. The sum of all angles turns out to be 3 into 180, which is 540, right? 360 plus 180, that is going to be 540. Sum of all angles is 540. What about the value of A? सारे angles को add करें. A plus 95 plus 110 plus 125 plus 65. This should equal 540. तो 540 में से आपको ये सारे numbers subtract करने. ठीक है, you can do it step by step. या left side को add कर ले. In fact, that's actually simpler rather than subtracting. पहले इन सारे numbers को add कर ले. That's going to be simpler. Okay. 95 plus 125, ये कितना होगा? ये होगा 220.
220 or 110, that's going to be 330. 330 plus 65, that's going to be 395. So A plus 395 degrees is equal to 540 degrees. So 540 में से minus कर दें. 540 minus 395. How do you do that? 540 में से 400 minus करें तो कितना होगा? 140. उसमें 5 और चाहिए आपको. That's 145 degrees. A की वैल्यू यहाँ पे 145 आनी चाहिए. Okay, so A angle is 145 degrees. Okay, let's move on. That was question number 8. Okay, let's do this. So it says Shani makes a sequence of patterns using counters. We have pattern 1. इसमें कितने counters नजर आ रहे हैं आपको? 5 नजर आ रहे हैं. उसके बाद फिर 8 है, फिर 11 है. उसने तीनों numbers यहाँ पे लिखे हुए. Now, looking at the pattern, what do you think the next numbers should be? आप pattern draw करके देख सकते हैं, but it's not necessary. Just look at the pattern that's emerging here. You see the difference is constant. 5 plus 3, that gives you 8. 8 plus 3, that gives you 11. Constant difference, it's a linear sequence. So next term kya honi chahiye? 14. And then the next term after that is going to be 17. All right, so that's pretty straightforward. And the second part, it says, find an expression in terms of n for the number of counters in pattern n. तो आपको nth term formula अब figure out करना है इसमें. ठीक है, आपको nth term formula चाहिए. It's a linear sequence. Linear sequence में nth term formula क्या होता है? It's a plus n minus 1 times the difference, right? A is the first term. That's 5 here. And D is the difference. The difference is 3. Just input values in this and see what that gives you. 5 plus n minus 1. N की value यहाँ पे क्या आ रही है? In fact, n की terms में आपको देना तो n minus 1 times the difference times 3. Simplify this and that gives you 5 plus 3n minus 3. And the nth term turns out to be 3n plus 2. Just write that here. That's 3n plus 2. Some people are able to write this directly. If you are one of them, that's perfectly okay. इसकी working आपको नहीं चाहिए होती, आप directly answer लिख सकते हैं, and that is going to be acceptable. Okay? वो आप कैसे लिखते हैं? Basically, जो difference होता है ना, वो n के साथ आता है, ये आपको पता होता है, और इसमें फिर आपने देखना होता है क्या चीज add करके आपको first term मिल रही है. तो अगर आप n की value 1 डालें यहाँ पे, तो first term के लिए आपको क्या चाहिए होगा? 2 add करना होगा, तब यहाँ पे आप 2 डाल देते हैं, and that gives you 3n plus 2 directly. So if you can do it that way, that's okay. Otherwise, an easier way is just to input values in this formula, and that will give you the result. Okay, let's look at part C now. It says Shani has 100 counters. She uses some of the counters to make pattern 20. She uses all the remaining counters to make pattern K. Find the value of K. All right. She has 100 counters in total. She has 100 counters in total. अब देखें counters क्या represent करे, जो nth term की value है, that's the number of counters, right? अब उसने क्या किया है? Pattern 20 बनाया. Pattern 20 का क्या मतलब है? Term 20. Term 20 में हम देख लेते हैं कितने counters आते हैं. ठीक है? Now you know what the formula is. You know Tn is 3n plus 2. You've already figured that formula out. Let me write that here. Tn is equal to 3n plus 2. You know this formula. तो अगर T20 आपके पास होगा, उसमें कितने counters use हो रहे होंगे? 3 into 20 plus 2. And what does that give us? That gives us 60 plus 2, which is 62. 62 counters use हो रहे हैं pattern 20 में. ठीक है? अब बाकी कितने counters बचे आपके पास? Remaining counters, how many are they? 100 minus 62, and that gives you 38. अब बाकी 38 counters बचे हैं. 38 counters से आपको कौन सा pattern मिलेगा? What you can do now is you can use this formula again. Tn equals 3n plus 2. अब आपको पता है number of counters कितने हैं? Number of counters is 38. तो आप Tn की जगह पे क्या करोगे? 38 डाल दोगे और आप देखोगे उसके corresponding n की value क्या आती है. Alright, तो अगर आपको pattern K चाहिए, for instance, pattern K में क्या होगा? You can write that way.
n की जगह k आ जाएगा, so that's tk equals 3k plus 2. n की जगह पे आपने k डाल दिया, राइट? अब हमें पता है कि पैटर्न k के अंदर कितने काउंटर्स यूज हो रहे हैं, 38 यूज हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे 38 डाल देंगे, 38 equals 3k plus 2. 2 goes to the other side and we get 3k equals 38 minus 2, that's 36, and the value of k turns out to be 36 over 3, which is 12. And that is what we were looking for here. The value of k turns out to be 12. Okay? So that is what we have in part C here. Let's move on. Question number 10. Now it says a bag contains red balls, blue balls, and green balls. The ratio of red and blue balls is 3:8, and the ratio of green and blue balls, that is 2:5. Work out the fraction of the balls that are blue. Fraction of the balls, that means जो total number है उसमें से कितने blue हैं. Now the trick in problems like these is कि जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या है, ब्लू कॉमन आ रहा है, राइट? ऊपर वाली रेशियो में ब्लू आ रहा है, नीचे वाले में ब्लू आ रहा है। तो आपने क्या करना है, ब्लू वाले नंबर को ना किसी तरह से सेम कर लेना है। अभी ऊपर 8 है, नीचे 5 है, यू वांट दैट टू बी द सेम। फिर आप तीनों की रेशियो इकट्ठे लग सकते हो, ठीक है? नाउ हाउ वुड दैट वर्क? 8 और 5 का आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। 8 और 5 का एलसीएम क्या होता है? यू कैन वर्क दैट आउट इफ यू कांट figure that out in your head. आप अलग से उसको इस तरह करके वो बना लें, whatever way you are used to for calculating LCM. अगर आप इसको कर सकते हैं in your head, तो आपको पता होना चाहिए 8 और 5 का LCM क्या होता है, 40 होता है। All right? तो आपको क्या करना है, ये जो सेकंड नंबर्स हैं इन दोनों को 40 बनाना है। फर्स्ट वाली रेशियो को हम कैसे 40 बना सकते हैं? 8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। That gives us 40 here. तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे and that gives us 15. तो 3:8 को हम लिख सकते हैं 15:40, राइट? इसी के सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास 3:8 है, उसको हम 15:40 भी लिख सकते हैं। अब 2:5 है, 5 को भी हमने 40 बनाना है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 40 बनेगा, हमें 40 से हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, that gives us 40. ओके, तो 2 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 8, what is that going to be? That's 16. So हमने दोनों रेशियोज को क्या किया, इस तरह से कन्वर्ट कर लिया कि एक नंबर दोनों में सेम हो गया, जो ब्लू आ रहा था दोनों में, ब्लू वाला नंबर दोनों का सेम हो गया, ठीक है? जब ये सेम हो जाए, अच्छा इसमें एलसीएम जरूरी नहीं है, आप ये भी कर सकते थे सिंपली बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, उससे भी आपके पास हो जाएगा। इस केस में तो वो एलसीएम ही आता है, बट अगर कुछ और भी होता तो वो मल्टीप्लाई करने से भी आप कर सकते थे, दैट्स आल्सो फाइन। बट एनीवे, ये जब नंबर सेम हो गए, इसका मतलब क्या है, इन तीनों कलर्स की रेशियो आप अब लिख सकते हो, रेड, ब्लू, और इनफैक्ट लेट्स राइट ग्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन तीनों कलर्स की रेशियो क्या होगी, रेड इज 15, ग्रीन इज 16 एंड ब्लू इज 40। ये इन तीनों की रेशियो हमारे पास आ गई, ठीक है? तो अगर आपने नंबर सेम कर लिया जब, तो उसके बाद आप तीनों की रेशियो इस तरह से इकट्ठे लिख सकते हो। एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉर द फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स दैट आर ब्लू। हाउ डू यू डू दैट? 40 balls are blue, right? Out of how many? 40 plus 15 plus 16. So 40 over 15 plus 16 plus 40. Yeah, देख लें क्या आता है. It's going to be 40 divided by 71, right? 40 plus 31, which is 71. So 40 over 71. This is the fraction of the balls that is blue. इसको simplify आप नहीं कर सकते, so you just write it as it is, 40 over 71. Okay, let's move on and do question number 11. Acha, in question number 11 it says, use a straight edge and compasses only to construct the bisector of angle PSR. Angle bisector आपने draw करना है, straight edge का मतलब है ruler, वो use कर सकते हैं, और आप compass use कर सकते हैं, तो आपने वो दोनों use करने हैं।
एंगल बाइसेक्टर बनाना है PSR का, PSR that is this angle, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे. Now remember how we draw angle bisectors. आपने क्या करना है? Now I can just explain this here. I can't show you how I'm using the compass here. तो हम आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ. एंगल S जो है आपने बाइसेक्ट करना है, ठीक है. आप क्या करोगे, एंगल S पे, इस पॉइंट S के ऊपर आप कंपास का वो जो शार्प एज है वो रखोगे, ठीक है. एंड यू विल मेक एन आर्क हियर लाइक दिस. कोई भी लेंथ आप बना दें, मतलब कंपास को आप जितना मर्जी खोल लें, दैट डजंट मैटर. आपने उसको थोड़ा सा खोल के इस तरह से आर्क बना देनी है. आर्क पूरी बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस उतना ही खोल के आपने एक मार्क यहाँ पे बनाना है और एक मार्क इधर बना देना है, सेम डिस्टेंस के ऊपर दोनों साइड्स पे, ठीक है. अब आपने क्या करना है, कंपास को थोड़ा सा ज्यादा खोलना है, इस पॉइंट पे रखना है उसको, इस पॉइंट पे, ठीक है. और आपने एक आर्क यहाँ पे बना देनी है और उसी तरह से उतनी कंपास खोल के रखनी है और दूसरे पॉइंट पे रखना है इस जगह पे, और एक आर्क यहाँ पे आपने और बना देना है. Now your pencil should be sharp for this, ताकि आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल रहा हो. जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होएगा इस तरह से, आपने क्या करना है, पॉइंट S से उस पे एक लाइन बना देनी है, दैट इज गोइंग टू बी योर परपेंडिकुलर, योर एंगल बाइसेक्टर. इस तरह से आपका ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा, ठीक है. Now of course when you do it on paper it's going to be more accurate, but roughly this is what it's going to look like, ठीक है. ये आपने कंपास के जो मार्क्स हैं ये इरेज नहीं करने हैं, you're going to leave them as they are, ठीक है. इनको आपने इरेज नहीं करना, ठीक है. Okay, now it says point X lies inside quadrilateral PQRS and is closer to PS than to RS. Quadrilateral PQRS के अंदर कोई point है X, but it's closer to PS, PS के करीब है और RS से दूर है. Shade the region in which X must lie. अब देखें RS वाली साइड आपने शेड कर देनी है. एंगल बाइसेक्टर के जो RS की तरफ जो रीजन है, you just shade that region. ये रीजन आपने शेड कर देना, ठीक है. This is the region that you have that satisfies the condition that they've given. All right, I hope that makes sense. That was question number 11. Let's move on. Question number 12. It says, write 0.002-03561 correct to 3 significant figures. Now, how do we do this? 3 significant figures. आपको significant figures के rules पता होने चाहिए. You can either write it in scientific form, लेकिन उसने यहाँ पे scientific form में लिखने का नहीं कहा, तो आपको जरूरी नहीं है वैसे लिखना. 3 significant figures. Remember, decimals के left side पे अगर 0 हो, तो ये वाले zeros significant नहीं होते, ठीक है. तो first number जो significant है, that is 2. तो 2, 0 and then this number, ये आपके 3 numbers आ रहे होंगे. लेकिन 3 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? You have 5 after this. तो इसका मतलब ये है कि 3 को आपको राउंड अप करना पड़ेगा. So it's going to become 0.00204 correct to 3 significant figures. All right. Now it says by writing each number correct to 1 significant figure, estimate the value of this fraction. हर नंबर को हम क्या करेंगे? 1 significant figure पे लिखेंगे. Now how does that work? 3.93 का स्क्वायर रूट है. 3.93 को 1 significant figure पे लिखें, एक सिंगल डिजिट आना चाहिए आपके पास, तो क्या किस पे राउंड ऑफ होगा? 4 पे हो जाएगा, यानी आप 4 स्क्वायर रूट. 63.7 को राउंड ऑफ करना है. Again, 1 significant figure पे. You're not going to write it as 64. 64 is 2 significant figures. 1 significant पे क्या होएगा? 64 को और राउंड ऑफ करें आप 10th digit के ऊपर, तो आपके पास वहां जाता है 60. All right. In the denominator, you have 0.425. Round that off to 1 significant figure as well, and that leaves you with 0.4. If you write this thing, that gives you 1 mark. Writing this thing, okay. And now you need to evaluate this and see what this turns out to be. How do we evaluate this? Square root of 4 evaluate kar le. That is going to give you 2 into 60.
ठीक है. In the denominator you have 0.4. 0.4 को आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/10. Can we do that? Or if it makes things any simpler for you, you can write it like this, divided by 0.4 है ना, 0.4 की जगह पे आप लिख सकते हैं 4/10, right? And then if you multiply this, it becomes 2 into 60 into 10/4. उसको आप fraction को interchange कर दोगे. And now you just simplify this and see what that gives you. Cancellation देख लें, होती है आपके पास 2 and 4 get cancelled. You have 2 left here. 2 ये 60 से cancel हो गया, आपके पास 30 बचेगा. 30 into 10, that is going to give you 300. And that is your final answer here. All right, let's move on to question number 13. Okay, so in 13, first part, it says square root of 9 into cube root of 64 whole square. You have to evaluate this thing. अच्छा, square root of 9 क्या होता है? 3. Cube root of 64, that is 4. आपको ये cubes और squares common याद होने चाहिए. 4 का cube 64 होता है. So 64 cube root is going to be 4. इस पूरे का square करना है. That's 12 square. 12 का square क्या हो जाएगा? आप अलग-अलग भी square कर सकते हो. That's also fine. आप 9 into 12 कर सकते, 9 into 16 कर सकते हो. And that is going to give you 144. And that's your final answer here. Okay, you can also write it as 12 squared. And that also gives you 144. So you can do it either way. Multiply हो रहे हैं तो multiply जब हो रहा होता है तो आप powers को अलग-अलग यहाँ पे लिख सकते हो. Plus minus हो रहा तो फिर नहीं कर सकते. Okay? अच्छा, अब हमारे पास next क्या है? It says write down an irrational value of n that satisfies this inequality. तो उसने क्या कहा है? 4.5 और 5.5 के दरम्यान में आपने कोई irrational number लिखना है. Now, how do we think about this? Irrational numbers जो common होते हैं आपके पास, एक तो pi होता है, right? या फिर कोई भी square root form के अंदर जो perfect square नहीं हो number, वो आपके पास है तो irrational होता है. So for example, square root of 6 is irrational because it's not a perfect square. Square root of 9 जो है वो rational है because square root of 9 आपको 3 दे देता है. So this is not irrational. तो essentially 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 and so on, इन numbers के square roots के अलावा जो बाकी numbers हैं उनके जो square root होंगे वो आपके irrational numbers होंगे. ठीक है, तो आपको क्या करना है? 4.5 और 5.5 के दरम्यान में कोई number देना है. That's irrational. आपको पता है इसके दरम्यान में 5 भी तो आता है ना. 5 का square क्या होता है? 25. तो हमें पता है square root of 25 हमें क्या देगा? 5 देगा, which is going to be between this number, and that's rational. इसके आसपास आप जो भी और square root देखोगे, 25 के आसपास किसी भी और number का square root आप देखोगे, for example 24, 26, 23, उनका जो square root होगा वो 4.5 और 5.5 के दरम्यान में भी होगा और वो irrational भी होगा. ठीक है, तो आप कोई भी number लिख सकते हो. You can say square root of 24 for instance. You could say square root of 23, 26, 27. ज्यादा दूर नहीं जाना because वो हो सकता है इस रेंज से बाहर निकल जाए. अगर आप 25 के आसपास बिल्कुल नंबर ले रहे हो तो उसका स्क्वायर रूट इसके दरम्यान में होगा कहीं पे. So this is one possible thing that you could do here. तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है? You could say square root of 24. This is one possible answer. Okay, ये आपने यहाँ पे लिख दिया. अच्छा, let's move on. It says write these numbers in order of size starting with the smallest. Smallest number से आपने start करना है, इसको order में लिखना है, increasing order में. ठीक है, so now let's think about this. अब सब numbers को जो scientific number form में आ रहे हैं इनको आप convert करना पड़ेगा. या तो सबको scientific में करें with the same power of 10, या फिर सबको decimals में लिख दें. That's going to be easier in this case because we have two numbers which are not in scientific form. इसको भी आप decimals में लिखें. 2 into 10 raised to the minus 4. What is that going to be? How many zeros do we need? तो ये 2 है ना पहले, 10 raised to the minus 4. तो पहले यहाँ पे इस तरह 2.0 आएगा तो डेसिमल 1 पॉइंट यहाँ पे गया
1, फिर 2 पॉइंट, एक और 0 लगाया, एक और 0 लगाया, एक और 0 लगाया, इट्स गोइंग टू बी 0.0002. एसेंशियली डेसिमल के बाद आपके पास 4 नंबर्स आ रहे होंगे इस तरह से 0.0002. ओके, दैट्स दिस नंबर. इसी तरह 2 into 10⁻⁻², तो 2.0 था, इस एक पॉइंट यहाँ पे जाएगा और फिर एक और चला जाएगा, इट्स गोइंग टू बिकम 0.02. So these are the numbers that you have. अब आपने देख लेना इनमें से सबसे छोटा कौन सा है. This is the smallest number, but you are not going to write this number. आपने original number लिखना होगा. Keep that in mind. This is the original number. So you start from that. 2 into 10⁻⁻⁴. अच्छा, उसका बड़ा number कौन सा है? You can see this is the next number. इसका original number आप लिखें, that's 0.002. Next one is 0.02. इसका original number क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? 2 into 10⁻⁻². You're going to write that 2 into 10⁻². And then finally you have 2000. And that is what you write here. In question number 15, it says, y is directly proportional to x minus 1 whole squared. When x is 5, y is 32. Find the value of y when x equals -2. Y is directly proportional to x minus 1 whole squared. How do we write that? We could say this is y equal to k into x minus 1 whole squared. अब उसने एक पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट इनपुट करके हम क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू निकाल सकते हैं. y की जगह पे 32 डाल दें और x की जगह पे 5 डाल दें. What do you get from that? You get 16k equal to 32, and the value of k from that turns out to be 2. Now, this equation therefore can be written as y equals 2 into x minus 1 whole squared. आप क्या करोगे, x की जगह पे -2 input कर दोगे, क्योंकि आपको y चाहिए when x is -2. Let's see what we get from that. Y equals 2 into -2 minus 1 whole squared, and that's -3 whole squared. -3 का whole squared कितना होता है? 9. And that is going to give you 18. So the y value turns out to be 18 here. ठीक है, ये हमारे पास 18 आ गया. That was pretty straightforward. Question number 15. Let's move on. Have a look at this. Question number 16. The graph of y equals x cube over 5 minus 3x plus 2 is drawn on the grid. You can see this graph here. It says by drawing a tangent, estimate the gradient of the curve at x equals -1. Now, where is x equal to -1? This is the point that we have, x equals -1. इस पे आप क्या करेंगे, एक tangent बनाएंगे और उसका gradient estimate करेंगे. Let's do that. Let's draw the tangent. Roughly हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं दोनों sides पे जो gap आ रहा है ना curve के और line के दरम्यान में, that should be almost same. Oh, what happened there? Try that again. So the tangent might look something like this. No, it's not a very good one. So I'll change that a bit. देखिए, मैंने अगर ये tangent बनाया है तो gap जो है right side के ऊपर वो बहुत कम है और left side पे एकदम बहुत ज़्यादा हो गया. Let me adjust it a bit. इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से tilt कर देता हूँ. Okay, sorry about that. Okay, just tilt it a bit. No, it doesn't work like that. नहीं. So OneNote में थोड़ा सा मसला होता है, PDF के ऊपर ड्रॉ करना जो है slightly tricky. Okay, so this could be one possible tangent. Okay, तो ये आपका tangent बन गया. Yeah, so it's causing some problems. Yeah, so this is one possible tangent that you could have. Roughly, this is what you could get. अब इसमें भी नीचे distance ज़्यादा हो गया, ऊपर थोड़ा कम है, तो इस तरह का आपके पास कुछ बन रहा होगा. ठीक है, so let's say this is what we have. Now, let's take some points and find the gradient of this tangent. अब इस tangent के ऊपर point ले लें कोई भी.
So I could take 1 point on one side and the other, another point on the other side. So let's say I take this point here. जो read करना आसान हो थोड़ा सा point exactly उस किसी vertex के ऊपर आ रहा हो तो इसमें x value क्या बनती है? The x value here is minus 1.5. Minus 1.5. Okay, x value is minus 1.5, and what about the y value? Y value is 6. This is one point that I have. Okay, let's take another point on the other side. यहाँ पे कोई point हम देख लेते हैं. Yeah, you could take this point for instance. On the x-axis, this is 0.1. On the y-axis, this is 2.4. देखें y-axis पे scale different है. 5 units, 5 small boxes represent 1 unit. तो ये आपका जो y-axis पे point होगा, this is going to be 2.4. यहाँ पे 2 points थे, इनका gradient find कर लें. देखें आपके पास क्या होता है. y2 minus y1, you can call any of them x1, y1. Let's call this x2, y2. Let's call this x1, y1. y2 minus y1, that would be 6 minus 2.4 divided by x2 minus x1, that's minus 1.5 minus 0.1. Okay, now let's simplify this. 6 minus 2.4, that is going to give me 3.6 divided by minus 1.6. ठीक है, अब इसको आपने evaluate करना है. देखें क्या आता है. You can write this as दोनों numerator denominator को दोनों का अगर आप 10 से multiply कर दें, what does that give us? That gives us minus 36 over 16. ठीक है, अब इसमें cancellation हो सकती है. 36 and 16, that's just going to give you 9 in the numerator and 4 in the denominator. So you have 9 over 4. 9 over 4 can be written as minus 2.25. All right, this is what you get. The gradient for us is turning out to be minus 2.25. All right, let's move on and do the next part. It says, by drawing a suitable straight line on the graph, find the solutions of this equation. X cubed over 5 minus 3x equals 0. Okay, so ये equation हमें solve करनी है. Now, you have to somehow connect it to the graph that you've drawn. आपने graph कौन से draw किया है? आपने graph draw किया है इस function का, x cubed over 5 minus 3x plus 2. Let me write that here. You've drawn the graph of x cubed minus x cubed over 5 minus 3x plus 2. This is the graph that you've drawn above. आपको इस ग्राफ को यूज करके कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है? x cube over 5 minus 3x equal to 0. Now the problem is, इसमें वो फंक्शन एग्जैक्टली तो नहीं आ रहा, इसका सिर्फ एक पार्ट आ रहा है, इतना वाला पार्ट. तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को ऐसे चेंज करोगे कि एक साइड पे एग्जैक्टली ये चीज आ जाए, एक साइड पे एग्जैक्टली ये फंक्शन आ जाए. तो हमें क्या करना है, वो फंक्शन करने के लिए +2 करना है. तो हम दोनों साइड्स पे इक्वेशन में क्या करते हैं, +2 कर लेते हैं. एंड वी गेट x cube over 5 minus 3x. इक्वेशन के दोनों साइड्स पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं ना. दोनों साइड्स को अगर आप 2 ऐड कर लें, लेफ्ट साइड पे गेट दिस एंड ऑन द राइट साइड यू हैव 0 plus 2, that's just 2. Okay, now on the left side you have this function. ये तो आपने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है. This is the curve that you have, right? उसने ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया हुआ है आपको. On the other side, you have another function, and that is y equal to 2. This is the line that you need to draw there on the graph and find कि ये ग्राफ और ये वाला ग्राफ ये कब intersect करते हैं, वो आपको solutions देंगे इसका. ठीक है? So the second line that you're going to draw there is y equals to 2 line. Now, what does this line look like? Y equals some constant. This line is a horizontal line. तो आप यहाँ पे आके draw कर दें. Y equals 2, this is going to look like this. Let me change the color here. Let's choose orange here. Y equals 2 के ऊपर एक line बना दें. Okay, I need to extend it a bit.
दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ठीक है, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी, y इक्वल्स टू, लेट्स जस्ट लेबल इट हियर y इक्वल्स टू। अब आपने क्या करना है, उसने कहा है फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपने देखना है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपको क्या मिलते हैं इसके ऊपर। दिस इज वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। व्हाट्स दिस पॉइंट? आपको देखें x की वैल्यू चाहिए ना, x कोऑर्डिनेट चाहिए सिर्फ। ओके, इक्वेशन के अंदर सिर्फ x आ रहा है, y तो है नहीं, तो आपको x की वैल्यूज निकालनी है। सो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x दैट वी हैव। इस पे आप देखें आपके पास क्या आता है। इट्स नॉट एग्जैक्टली ऑन अ कॉर्नर, it's somewhere around minus 3.85, minus 3.9 लगते हैं, minus 3.85 लगते हैं। That's one result that you're getting here, minus 3.85. Okay, अच्छा, और कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है? एक तो बिल्कुल जीरो पे आ रहा है, this one, all right, ये भी आप यहाँ पे लिखेंगे। Another possible answer is 0. And then you see, then you look for another point of intersection that is at the end here. ये उसी तरह से पॉजिटिव साइड पे 3.85 और 3.9 के दरमियान में कुछ आ रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 3.85, जिस तरह आपने नेगेटिव साइड पे लिखा था इसको भी आप इस तरह लिख लें, दिस इज 3.85. Okay, so these are the three answers that we get from this. That is what we were looking for. Okay, this was question number 16 from this paper. Let's move on. Let's do 17 now. It says, Ryan says, each diagonal of quadrilateral Q divides it into two congruent isosceles triangles. Draw a ring around each of the quadrilaterals in the list for which Ryan's statement is always true. Okay, now that's interesting. Square कैसा होता है? This is what a square looks like. अगर आप यहाँ पे दो डायगोनल्स बनाते हो, दो ही डायगोनल्स होंगे इसका, राइट? एक डायगोनल ये होता है, एक डायगोनल ये होगा दूसरा। उसने कहा है the diagonal of the quadrilateral divides the shape into two congruent isosceles triangles. अच्छा, तो एक डायगोनल हम इस तरह बनाते हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है, दो साइड्स इक्वल है, और तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरी साइड पे भी आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, दूसरे डायगोनल पे भी ऐसे होएगा, तो स्क्वायर में दिस इज ट्रू। ओके, अच्छा, ये चीज हम रेक्टेंगल में देखें, रेक्टेंगल में हम डायग्राम बनाते हैं, दिस इज नॉट ट्रू, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनती है, ठीक है, सो दिस इज नॉट ट्रू, रेक्टेंगल में नहीं होता। Rhombus में, let's think about that. Rhombus is a shape like this with all sides equal. Rhombus में क्या हो रहा होगा? डायगोनल पे क्या होगा? आपको पता है दो साइड्स इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है, दो साइड्स आपकी हैं उस तरह से, और ये जो ट्रायंगल्स बनेगी तो कॉन्ग्रुएंट भी होंगी, आइसोसेलेस भी होंगी, सो rhombus will be this holds true. So this is also true. Parallelogram पे नहीं होगा for the same reason that it doesn't work for rectangle. Parallelogram is going to look like this. इसमें आप जब ट्रायंगल आप डायगोनल बनाएंगे, दो साइड्स इक्वल नहीं आ रही होंगी, ठीक है, ट्रायंगल्स की दो साइड्स इक्वल नहीं आ रही होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगे लेकिन इक्वल नहीं आ रहे होंगे। ट्रिपीजियम तो वैसे ही उसमें सिमेट्री कोई नहीं होती है, तो उसमें यू शुड जस्ट नो कि उसमें नहीं आएगा। काइट में क्या होएगा? काइट लुक्स लाइक दिस। इसमें अगर आप डायगोनल बनाते हो इस तरह से, again you get two congruent triangles but they're not isosceles, lengths different in general. Okay, so ये भी true नहीं है, so it's only true for square and rhombus. आप क्या करेंगे, square को encircle कर देंगे और rhombus को encircle कर देंगे। These are the two that satisfy the condition कि जो diagonal से, दोनों diagonal से जो triangles बनती हैं, they are both congruent, यानी कि same size है उनका, सारी lengths equal है, and isosceles, उनकी दो sides equal है आपस में। Alright, so इन दो के लिए that holds true. Part B, AXB and CXD are straight lines. You can see that in the figure there. X is the midpoint of AB, okay, and AC is parallel to DB. This is the information that we're given. We need to show that AXC is congruent to BXD. अच्छा, AXC is congruent to BXD. इसमें देखें ऑर्डर मैटर करता है, ए को कौन सा पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, बी वहां पे, ठीक है, एक्स तो एक्स ही है और सी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है डी। तो आपने ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल सी एंगल डी के इक्वल है,
और आपने साइड देखनी है कि अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि कोई साइड इक्वल है नहीं है। आपके पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट? SSS, SAS, AAS, RHS। अच्छा, लेट्स थिंक अबाउट दिस। अब देखें, एक ट्राइंगल आपके पास AXC, दिस इज वन ट्राइंगल, द अदर ट्राइंगल इज ऑन द अदर साइड BXT। अब पॉइंट X पे आपके लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो आप क्या कहोगे कि एंगल AXC, you can write that here, angle AXC is equal to the angle BXT. Why? You have to write down the reason for this. What's the reason for this? These are vertically opposite angles. Vertically opposite angles. ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख लें या पूरा लिख लें, that's your choice. These are vertically opposite. उसको समझ आना चाहिए आपने vertically opposite कुछ लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है? अच्छा, अब इसका क्या फायदा हुआ? ये तो एंगल आ गया, हमें इसने बताया हुआ है कि X is the midpoint of AB. Okay, that means this length and this length, they are going to be equal. It's given, right? So AX is equal to BX. एक लेंथ हमें पता है, Y उसने कहा हुआ है X जो है वो मिड पॉइंट है. That's the reason that we have for this. X is midpoint of AB. अच्छा, एक साइड होगी और हमारे पास एक एंगल हो गया. Now, can we just prove that one more angle is also equal? Can we do that somehow? We could use alternate angles because we know these two lines are parallel, BD and AC. These are parallel lines. Parallel lines के दरम्यान में एक आपकी ये ऐसे लाइन जा रही है, right? So this angle is equal to this angle. These are alternate angles. And similarly, on the other side as well, you have this line. This angle is equal to this angle. Again, alternate angles. So alternate angles वाली property use करके बाकी pairs of angles में से कोई भी एक आप prove कर दें, that's going to be enough. Okay, so let's say I prove that the angle ACX is equal to, so this angle, this is equal to BDX. ठीक है, जो C पे पॉइंट, C पे एंगल बन रहा है, D पे एंगल बन रहा है, वो इक्वल है. Why? You have to give the reason for this. These are alternate angles. That's the reason. These are alternate angles. ठीक है, अब देखें दो एंगल्स आपने प्रूव कर दिए और एक साइड प्रूव कर दिया कोई भी. So now you say these are congruent. Why? Because AAS property is satisfied, right? So you say the triangles are congruent. तो आपको प्रॉपर्टी मेंशन करनी होगी, कौन सी आप यूज करें. इस केस के अंदर आई एम यूजिंग AAS because we have proved that two angles are equal and one side is also equal. All right, let's move on. इसमें आपको कंडीशन नहीं होती है कौन सा एंगल हो कौन सी साइड हो, बिकॉज AAS है ना, तो कोई भी दो एंगल्स हो सकते हैं. जब दो एंगल्स इक्वल है, थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होना चाहिए पर, राइट? बिकॉज 360 टोटल एंगल है, सॉरी 180 टोटल एंगल है, तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा. तो आपने एंगल्स प्रूव करने इक्वल है और कोई भी एक साइड प्रूव करनी है. दैट इज एनफ टू प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, लेट्स मूव ऑन. नाउ वी हैव this function. We have to find the inverse of this function. क्या करते हैं इसके लिए? We say let y equals f of x. That gives us y equals 3x minus 7. All we have to do now is make x the subject, and that gives us 3x equals y plus 7, and x equals y plus 7 divided by 3. And at this point, what you do is, in place of x, you input f inverse of x. So right side पे आप variable change कर देते हो. So this is x instead of y, and becomes x plus 7 over 3. Okay, you write this down here, x plus 7 over 3. This is f inverse of x. That's what we were looking for. Okay, let's look at question number 19. You have this universal set A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. You have the first 10 letters of the English alphabet. We have 3 more sets given, P, Q, R. We need to find P union Q first of all. P और Q को आपने merge कर देना है और repetitions को remove कर देना है. ठीक है, let's do that. ये आपने set notation use करनी है. ठीक है, A आ रहा है पहले P में,
B नहीं है किसी में भी, P और Q में से दोनों में किसी में B नहीं है, C भी नहीं है, D भी नहीं है, the next letter is E. So we have E here and we have F, Q के अंदर F आ रहा है, and we also have G and Q, we have H and Q, I दोनों में आया है, उसको एक साइड एक दफा रख लेंगे, और J भी आपके पास Q में आ रहा है. This is P union Q. ओके, बस दोनों साइड्स को मर्ज कर दिया और रेपिटेशन को रिमूव कर देना है. आई जो है वो 2 दफा नहीं लिखना, उसको एक ही दफा लिखना है. ठीक है. अच्छा, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. नाउ इट सेज फाइंड n of p complement intersection q union r. ये जो बाहर n लिखा होता है इसका मतलब होता है नंबर कि कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर. आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिगर आउट करना है. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिगर आउट करने हैं इस सेट के अंदर. नाउ लेट्स डू दैट. How do we think about this? Number of elements के अंदर कितने होंगे? Let's start from the innermost set that we have, Q union R. Q union R के अंदर कौन कौन से सेट आ रहे होंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे होंगे? Q और R को यूनियन कर दें. That gives us basically pretty much everything. That is F. So order में लिख लेते हैं to make things easier. Q और R को combine किया, C D E F G H I J. तो इस यूनियन के अंदर A और B के अलावा सब कुछ आ रहा है. ठीक है, इसका आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है किसके साथ? P कॉम्प्लीमेंट के साथ. P कॉम्प्लीमेंट क्या है? एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम A E and I. A E और I के अलावा बाकी सब कुछ. दैट मींस B C D E नहीं लिखना, F G H I नहीं लिखना, फिर J. इनका इंटरसेक्शन देखना क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है? C is common, that's one element. D is common, second element. F is common, G is common, H is common, and J is common. कितने common elements आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6. The number of elements that you have in this set is going to be 6. आप यहाँ पे लिख देंगे 6. Elements नहीं लिखने हैं यहाँ पे आंसर में आपने लिखना है कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, नंबर लिखने वाले एलिमेंट्स. But the total number of elements that you have is 6 here. Okay, let's look at part B now. Use set notation to describe the shaded subset in the Venn diagram. Now, how do we describe this Venn diagram? Let's think about this. अच्छा देखें, आप यहाँ पे क्या है? So intersection और union का सोचें. Intersection क्या होता है? And दोनों conditions meet हो रही हो. Union क्या होता है? और कोई भी एक condition meet हो रही हो. अब आप इस set को कैसे सोच सकते हैं? A के अंदर होना चाहिए और C के भी अंदर होना चाहिए. A और C दोनों के अंदर है. So, A के inside होना चाहिए, right? So it's inside A and inside C as well. A और C दोनों के अंदर होना चाहिए. ठीक है, जो ये वाला पार्ट है इसमें क्या कॉमन चीज है? ये A में भी आ रहा है और C में भी आ रहा है, दोनों के अंदर आ रहा है. But at the same time B के बाहर है. B के ये पूरा रीजन बाहर है, B के अंदर कोई भी पार्ट नहीं आ रहा. तो A और C का जो कॉमन पार्ट था ये वाला, वो हमने निकाल दिया. तो जो B आ रहा है जहां पे, वो वाला पार्ट नहीं कंसिडर कर रहा है. सो इट शुड बी द रीजन इज inside A and inside C and it's outside B. How do you write that in set notation? A and C and outside B. That's how you can write it. Okay, इसका order जो मर्जी रख सकते हैं, that doesn't matter. Intersection है सारे, तो order आप कुछ भी कर सकते हो. You would say A intersection C के A और C दोनों के अंदर होना चाहिए and at the same time B के अंदर नहीं होना चाहिए. So this is how you describe this region. It's A intersection C intersection B complement. That's the result here. Okay, let's move on. That was question number 19. Let's look at question number 20 now. It says A, B, C, and D are points on the circle center O.
फाइंड ADB, ये एंगल आपको फिगर आउट करना है। अच्छा देखें, A और B एक कॉर्ड है, AB इज अ कॉर्ड, इस कॉर्ड से एक एंगल आपका आ रहा है सेंटर पे, और इसी कॉर्ड से एक एंगल आपके पास आ रहा है सर्कमफेरेंस पे, दैट्स द एंगल ADB, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। एंगल एट सेंटर इज 2 टाइम्स द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। तो अगर ये एंगल 70 है तो सर्कमफेरेंस वाला एंगल कितना होगा, उसका हाफ। दिस इज सपोज्ड टू बी 35, 70 over 2, दैट्स गोइंग टू बी 35, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 35 डिग्रीज। ठीक है, ये 1 मार्क है, इसमें रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर का मार्क होगा। Okay, but what are we using here? We're using the property angle at center is 2 times the angle at the circumference. Now it says find BCD. That means we're looking for this angle now. Ye angle chahiye. How do you figure this out? We could use a chord, or yeah, so we could use actually cyclic chord, because ye देखें 1, 2, 3, 4. This is a quadrilateral and it's a cyclic quadrilateral. 4-sided figure है, इसके सारे vertices circle के ऊपर lie कर रहे हैं। तो अगर हम किसी तरह से ये फिगर आउट कर लें कि ये पूरा एंगल कितना है, तो ये ऑपोजिट एंगल कितना होएगा, 180 में से माइनस कर देंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 होता है, राइट? कैन वी फाइंड दिस कंप्लीट एंगल? Let's figure that out. We know that OA is a radius, OB is also a radius. इसका मतलब ये है कि ये OAB जो है, this is an isosceles triangle. So these angles here are going to be equal. So for example, angle OAB here, what is that going to be? It's a 2-mark question, so it's better that you write down the working as well. Don't just do all of this mentally. OAB, ये angle क्या होएगा? 180 में से 70 माइनस करें, ये बाकी दोनों एंगल्स आके ये दोनों इक्वल है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, and that gives you 110 over 2, that is 55 degrees. This angle here is 55 degrees, and that means this total angle DAB, BAD, angle BAD, it's 25 plus 55, and that gives us 80 degrees. ठीक है, एंगल BAD 80 डिग्रीज है, पूरा एंगल 80 डिग्रीज हो गया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इसको जो ऑपोजिट एंगल होएगा वो क्या होगा, 180 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, सो हमें कौन सा एंगल चाहिए था, एंगल BCD। What is that going to be? 180 minus 80, and that gives us 100 degrees. So this is 100 degrees. That's what we were looking for here. Okay, let's move on. That was question number 20 from this paper. Let's look at the next one. 21. It says factorize 4x squared plus 5x minus 6. Now, can we break the middle term? 4 into 6 gives us 24. Minus करके 5 कैसे आ सकता है 24 के factors में? We could use 8 and 3. So it becomes 4x squared plus 8x minus 3x minus 6, right? 8 और 3 को multiply करते हैं तो 24 आता है, minus करके, because ये minus है। अब इसको factorize कर लें, it gives you 4x into x plus 2 minus 3 into x plus 2. The factors turn out to be 4x minus 3 into x plus 2. ये आपने आंसर यहाँ पे लिख देना है, 4x minus 3 into x plus 2. And that's your final answer. Okay, let's look at the next one. Now it says simplify 16 over x raised to power 6 whole raised to power 1 over 2. Now, what do we do for this? It becomes, so to get rid of this negative power, one idea is that you take reciprocate. Or let me actually just write it down as it is. First of all, it's 16 raised to power minus 1 over 2. Divide हो रहे हैं, उनकी powers को अलग-अलग लिख सकते हैं. And we have x raised to power 6 whole raised to power minus 1 over 2. अब माइनस पावर्स, नेगेटिव पावर्स को हमें खत्म करना, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको फ्लिप कर दें, नीचे वाला ऊपर ले जाएं. It becomes x raised to power 6 whole power 1 over 2. And in the denominator, we have 16 raised to power 1 over 2. Right? Negative powers positive हो जाएंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर मिलेगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर मिलेगा. Now, what is x power 6 whole power 1 over 2? ये powers multiply हो जाएंगे, right? 6 into 1 over 2, that's x cube.
नीचे क्या है 16 रेज़्ड टू पावर 1/2 यानी 16 का स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। सो वी हैव x क्यूब डिवाइडेड बाय 4 हियर एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर। ये आपके पास आता है इसको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 22. A bag contains these 9 letter tiles. So it reads isosceles. These are 9 letters in total. Nu takes one tile from the bag at random. She notes the letter and then puts the tile back in the bag. So she's putting the tile back in the bag. इसका मतलब है कि यहाँ पे probability का उसने पूछा है, probabilities change नहीं होंगी, हर दफा same probability होगी। अगर आप multiple times अगर वो निकालती है, क्योंकि वापस रख रही है तो first time जो probability थी बाद में भी वही रहेगी, change नहीं हो रही होंगी probabilities. It says find the probability that she does not take a letter E. Now she's taking just one tile from the bag. Okay, total 9 है। 9 में से कितने E's हैं? 1, 2. You have 2 E's. Not E कितने होंगे? Not E are 7. Out of how many? 9. तो not E की probability क्या होगी? 7/9. Right? E की 2/9 होगी तो not E की कितनी होगी? 7/9. Now it says Nu takes 2 of the 9 letter tiles at random without replacement. Okay, without replacement means when she takes one out, she's not putting that back before taking out the next one. एक दफा उसने जब बाहर निकाल ली, उसको वापस नहीं रख रही अब वो। Find the probability that both the tiles show the same letter. Okay. अब देखिए आपके पास कौन कौन से different letters हैं? You have I's. How many I's do you have? You have only one I. You have S. How many S do you have? 1, 2, 3 S's. Then you have O. There's only one of that. Then you have C. There's only one of that as well. Then you have E. There are 2 of that. And you have L, and there's 1 of that. And that completes your 9 letters. 4, 6, 9. अब देखिए उसने कहा है find the probability that both tiles show the same letter. क्या क्या possibilities हो सकती हैं? I 2 दफा आ सकता है क्या? जब एक दफा I निकाल लिया तो उसके अंदर तो कोई I बचा ही नहीं। Without replacement है ना, वापस नहीं रखे, तो 2 I's तो नहीं आ सकते। That's not possible. अब इसका ट्री भी बना सकते हो, but that's going to be pretty cluttered. If you want, you can do that. But इसको आप डायरेक्टली वैसे कर सकते हो logically. I 2 दफा नहीं आ सकता, right? Because वो है ही एक। इसी तरह से O भी नहीं आ सकता, C भी नहीं आ सकता और L भी नहीं आ सकता। There are only two possibilities, and they are कि 2 दफा S आ जाए, right? So we need to find the probability of getting S twice. First time भी S आ गया, second time भी S आ गया, या फिर so there's an or, so we add these two probabilities, or we could have probability of having 2 E's. ये 2 probabilities हमने निकाली हैं। ठीक है, let me actually be more precise here. So we're saying one case is probability of first S and second S. First भी S है, second भी S आ जाए, or so there's a plus sign between them. First E आ जाए, and at the same time second वाला जो है वो भी E आ जाए. These are the two cases that we have. Now, what's the probability of getting 2 S's? First time S आने की क्या probability है? There are 3 S. First time S आने की probability क्या होगी? 3 out of 9. All right? अब जो first time S आपने निकाल लिया, कितने S बचा बाकी? You have 2 S left. Out of how many? 8. So second time S की probability क्या होगी? 2/8. That's the first possibility कि दोनों S आ रहे हैं आपके पास. The second possibility is you have 2 E's. First time E निकालने की क्या probability है? You have 2 E's out of how many? 9. First time E की probability आपके पास होगी 2/9. Once you have already taken out 1 E, how many E's are you left with? How many E's are you left with? You're left with only 1 E, so that's 1 out of how many? 8. That's 1/8. ये आप evaluate कर लेंगे, देखें आपके पास क्या आता है। ठीक है, let's do that. Oh yeah, so I forgot calculator is not allowed, so you can't do that. Let's simplify this. Numerator में आपके पास क्या आ रहा है?
So let's actually keep it as it is for now because denominators दोनों same बन रहे हैं ना, तो LCM भी लेना पड़ेगा. अब as it is रखने पहले. You have 6 over 72 plus 2 over 72. Okay, that gives me 8 over 72. And now you can simplify this. 72 over 8. ये कितना होता है? 9, right? So it becomes 1 over 9. That's the probability that you're looking for. उसने यहाँ पे वैसे simplify करने के लिए नहीं कहा. You could just leave it like this as well if you wanted, but it's better to simplify. It gives you 1 over 9. All right, Aswad, I'll be doing that inshallah, but not right now. It'll be after 12th. आपके एडमिट्स के पेपर थोड़ा सा लेट है ना, तो 12th को A levels के सारे पेपर्स खत्म हो जाएंगे 12th May को inshallah. So after 12th, I will start AdMath streams as well inshallah. Okay, so we have 4 A level papers in a very short span of time. 3rd को है, फिर 5th को है, फिर 10th को है, फिर 12th को है. उसके साथ फिर O level का paper 1 भी है. So that's why I started this early. But 12th May के बाद I will start AdMath as well inshallah. Okay. All right, let's move on. Question number 23. The diagram shows the major sector of a circle with center O and radius 3 centimeters. Okay, so you have a major sector. Its radius is 3 centimeters. So this length is 3 centimeters. And the center is O. Calculate the area of the sector. Give your answer in the form k pi where k is an integer. तो आपको pi के terms में आंसर देना है. ठीक है. अच्छा, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है. अब देखें 80 डिग्री से ये है, तो दोबारा से ऊपर चला गया. इसके क्या मिनट. ओके, 80 डिग्री से अगर ये साइड वाला एंगल है, तो बाकी कितना होगा मेजर सेक्टर का एंगल? 360 minus 80. What does that give you? That gives you 280. The angle of the major sector is 280 degrees. Now, what's the formula for area of a sector? It's theta over 360 into pi r square. Pi r square circle के area का formula होता है. उसमें हम essentially ratio निकाल रहे होते हैं. अच्छा, 360 में से कितना angle हमारे पास है? यहाँ पे 280. तो उसकी कितनी fraction इस sector के अंदर आ रहा होगा उस area का? That's theta over 360. Okay, यहाँ पे लिख लें. It's going to be 280 over 360 into pi r squared. The radius is 3 here, so that's 3 squared. Let's simplify this now. 0 and 0 get cancelled. Let me write that down here. 28 over 36 into 9 times pi. 9 gets cancelled with this. You have 4 left. 4 and 28, they get cancelled. You have 7 left here. And that's it. So you have 7 pi as your answer here. 7 pi. That's what we were looking for. इसको pi की terms में छोड़ देना है. इसको आपने आगे simplify नहीं करना. ठीक है? Of course, कर भी नहीं सकते without a calculator. You just leave it like this. Okay? अच्छा, now it says solve this equation. That's pretty straightforward. अब क्या करें? Denominator को वहाँ पे जाके multiply कर दें. It gives you 2 minus 5x equals 3 into 3x plus 10, and you get 2 minus 5x equals 9x plus 30, and that gives you 14x equals minus 28. मैं 5x को यहाँ पे ले गया, that gives us 14x. 30 left side पे आ गया. 2 minus 30, that gives you minus 28. X equals minus 28 divided by 14, that is going to be minus 2. So x की value हमारे पास आ गई minus 2. ठीक है. Part B says, express as a single fraction in its simplest form, this thing. Okay, so we have to take LCM for this. क्या करें? Denominators को बस multiply कर दें. इस केस के अंदर x minus 2 into 2x plus 1. What about the numerator? 2x plus 1 gets multiplied with this, and that gives you 3 into 2x plus 1. Subtract from that 5 into this. That's 5 into x minus 2. Make sure that you're using brackets properly. Otherwise, बहुत ज़्यादा chances हैं कि आप कोई ना कोई इसमें sign की mistake कर देंगे. Brackets use करने हैं, please. Okay. Now let's simplify this. Numerator में we get 6x plus 3 minus 5x plus 10.
अच्छा, डिनोमिनेटर जो है ना वो सिंप्लीफाई करना जरूरी नहीं होता, आप इसको एज इट इज पे छोड़ सकते हैं, दैट्स ओके। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करना जरूरी होता है, डिनोमिनेटर इज योर चॉइस। लेट्स डू दैट एज वेल जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। 2x square plus x minus 4x minus 2. Now, what do we get from this? 6x minus 5x, that's x plus 13. In the denominator, we have 2x squared minus 3x minus 2. ये आपके पास single fraction आ गई, you'll just write that here, x plus 13 divided by 2x squared minus 3x minus 2. And that's your final answer. Okay, that was 24 part B. Let's move on. Question number 25. Let's have a look at this. OABC and OPQR are parallelograms. So you have a big parallelogram here and you have a small parallelogram here. A is a point on OP and C is a point on OR. You can see that in the diagram. उसने यहाँ पे लिखा हुआ है OA vector is equal to A and OC vector is equal to C. You have that in the diagram as well. OA or OC vectors उसने दिया है किसके equal है. And then you're given some ratios. OA ratio OP is 1:4. You can write it like this if you want. You can say OA divided by OP, what is that? That is 1/4. ये आपके पास OA और OP की रेशियो है. Another way to write this would be, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, this gives you 4 into OA, that is equal to OP. So OP is 4 times OA. ठीक है, रेशियो को यूज करके आपने इस तरह से एक रिलेशन निकाल लिया बिटवीन OP एंड OA. तो whatever OA is, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो OP आ जाएगा. तो हमें पता है OA वेक्टर A है, तो हम OP वेक्टर लिख सकते हैं. फिर OP वेक्टर क्या हो जाएगा, ऊपर लिख लेते हैं. OP वेक्टर क्या हो जाएगा फिर, 4 times A हो जाएगा. Using similar logic, we're given OC ratio CR. Okay, not the same logic, it's slightly different. यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, OC ratio CR. Okay, let's write that down like that as well. This is OC over CR. Okay, this is equal to 2/3. ठीक है. अब OC आपको ऑलरेडी पता है, OC आपको ऑलरेडी पता है. आपको फाइंड क्या करना हो सकता है, आपको CR फाइंड करना हो सकता है, या हो सकता है OR टोटल फाइंड करना. ठीक है. How do you figure that out? One possibility is, आपको अगर CR फाइंड करना हो तो आप CR को सब्जेक्ट बना लो उसके अंदर. Let me actually cross multiply first of all to make things simpler. This is 3OC equals 2CR, and CR turns out to be 3/2 times OC, right? तो अगर आपको पता है OC वेक्टर is C, तो CR वेक्टर कितना हो जाएगा, CR vector is going to be 3/2 times C. Once you've done this working, the rest of the problem is going to be pretty straightforward after this. Relatively straightforward, okay? Not, depends on what the questions are, but ये आपने इसको, ये working आपने एक दफा कर लिया यहाँ पे, ठीक है. Ratios को आपने सही तरह से proper formula लिख लिया. So you have the vector OP now and also the vector CR. अगर आपको ये पूरा vector चाहिए होता है OR, वो भी आप निकाल सकते हैं. That's just OC plus CR. That's going to be 5/2C. Now let's see the questions that we have. In the first part, it says, find OR vector in terms of C. O से R, right? अब देखें सारी वर्किंग हमने कर लिया ऊपर. OR vector क्या होएगा? अगर आपने इस तरह से किया जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको एक स्टेप और करना पड़ जाएगा यहाँ पे. That's OC plus CR. OC और CR को ऐड कर दें, OC C पे चले जाएंगे, फिर C पे R पे चले जाएं. Right? That's the vector OR. OC क्या है? OC is C. Right? It's given here. What about CR? We figured that out here. That's 3/2 times C. Right? So 1C plus 3/2C. 1 plus 3/2 कितना होता है? 5/2.
So it gives us 5 over 2 times C. This is 5 over 2 times C. That's the vector OR. ठीक है, ये figure out कर लिया हमने. अच्छा, अब वो क्या कहता है? Find CQ as simply as possible in terms of A and C. CQ, जब भी डायग्राम बनी होगी ना, आप देखना है डायग्राम से मैं कौन सा पाथ फॉलो कर सकता हूँ. C से स्टार्ट करना है और Q पे जाना है. Right? So you can go from C to R. You know this already, you figured this out. And then you can go from R to Q. And that will give you CQ, right? So we can say CQ vector is equal to CR vector plus RQ vector. अच्छा, CR vector तो हमने निकाले पहले आप. That's 3 over 2C. Let's just write that down here. What about RQ vector? It's a parallelogram. Since it's a parallelogram, जो RQ vector होगा, that's going to be the same as the vector OP. इसका जो opposite vector OP है, वो उसके same होएगा. OP हमें पता है क्या, हमने figure out कर लिया हुआ पहले. OP is 4 times A. So RQ भी कितना होना चाहिए फिर? ये भी 4 times A ही होना चाहिए. Okay, so we say this is 4 times A, and that's it. That's what you needed. आपने वो सारी working ऊपर कर ली थी एक दफा. Now you just use that. You can write this down here. इसी तरह लिख दें या A को पहले लिखना चाहें पहले लिख लें. That's your choice. It doesn't really matter. 4A plus 3 over 2 times C. That's our final result here. That's the vector CQ. Okay.